Right. So we have seen in the last class how to manage serialization and deserialization using pickle module. ठीक है? So serialization is nothing but it captures the snapshot or the status of your current object and writes it to a binary file, and then you can retrieve it back, which is known as pickling, and then you can retrieve it back in the same form whenever you want from the binary file uh, using the process of unpickling. ठीक है, उसके लिए दो फंक्शन हम लोग यूज करते थे. द फंक्शंस वर लोड एंड डंप. ठीक, right. So I guess I have started the recording. Yeah. Now we'll see कि what type of question comes or how will you solve it. तो ये question देखो. Let me pick it up from here. First we'll pick up this one. Okay. Now इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज गिवन इन योर मार्किंग स्कीम जो सॉल्यूशन वाले में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू शुड नॉट लूज मार्क्स हियर. ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है a binary file book.dat has a structure. This structure means one list is written inside. That means it says कि एक binary file है, there is a binary file okay जिसका नाम है, the name of that binary file is book.dat. Just a minute. Book.dat. Now this file has a structure. That means this file has a data pickled inside it. ठीक है, दैट मीन्स वो कौन सा टाइप का डेटा है देखोगे, दिस इज अ लिस्ट. उसके अंदर किसको पिकल किया गया है? लिस्ट को. As a stream of bytes, a data has been serialized or pickled inside it, which is a, and that data object is what? List. Okay, and that list is of form book ID, book number, book name, author, and price. That means something like this. Book number हो सकता है, let's say मान लो कि किसी लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी में इस तरह करके वो लोग मेंटेन कर सकते हैं. So let's say the book number is 100, internal code something is there. Book name is anything, uh, XYZ. Of course, this is going to be string. Then author name is ABC. And price can be anything. Let's say price is 150.50. This is the form that now, of course, for example, I have shown that okay, this is a list and which you can read, but this thing will be in a form of what? Stream of bytes, which will be in the binary form and you won't be able to read it. तो ऐसे करके तुम्हारा कुछ बोल रहा है कि एक फाइल होगा जिसमें somebody has
pickled a list, and that list was containing this form of elements. So now the question further says, write a user defined function, create file to input data for a record and add to the book.dat. Now अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि you should define a function such that whenever that function is called, each time that function is called, मान लो कि तुम ऐसे करते हो, फंक्शन कॉल करते हो create file. If the function is called in the main program, one more record should get added. Okay, one more record should get added. If you call it another one more time, another record should be pickled. Okay, so each time you keep calling, okay, this book.dat will keep adding this. What you say is another every time this function is called. So this is going to result in pickling of one more list inside it, and that list will be having this structure. That means list के अंदर ये सारे elements होंगे. So every time you call a function, this function will, what you say, will get invoked, and this function will ask for how many values, 1 2 3 4, ये 4 values पूछेगा तुमसे वो function, और वो 4 value पूछने के बाद all the 4 values will be pickled, all the 4 values will be put inside the list. So for example कुछ ऐसा होगा, I'm just showing you in rough. Def create file, okay, and then you will have for example book number is equals to int input similarly book name is going to be string, so only input. Similarly you will have for author will also be string, so only input. Okay. Then you will have price can be in decimal also, so we will take it as float input. Okay. Once you have accepted the 4 values, make them a list, put them inside a list. Okay, so what you will do is structure, struct, something like that you can write, is equals to book number, comma, book name, comma, ठीक है, उसके बाद author and price. And further what you will do, further open a file in write binary mode and pickle. When I say pickle, I am particularly meaning dump this structure, the struct in it. Okay. This will solve part 1 of the question. And then of course close the file. So every time you will call, this function is called, the function defined above somewhere, create file, will ask for these 4 values, form a list out of it, and then you will open a file, considering you have already imported a pickle module in above.
somewhere. Then you will open a file in write binary mode. You will pickle an object inside it. Pickling means you will dump this structure inside it, and then you will close the file. So second time when you will call, again the same thing will happen. One more time you will call, you will again same thing will happen, and in this way, every time you call, one list will be you will keep on pickling or dumping one list in binary form in your book.dat. नॉट अ फाइल, इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, बुक डॉट डैट ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बुक डॉट डैट मेंशन्ड है. सो नाउ टेल मी कि इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू एंड हाउ टू सॉल्व. वी विल ऑफ कोर्स सी द आंसर एज वेल. ठीक है, बता दो. आई थिंक ओनली 4 ऑफ यू आर हियर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अच्छा 5, सौरभ भी आ गया, गुड. देखो प्रियंका, पलक, ओके, अखिला एंड अदर्स. राइट, तो इसका हम लोग, so what if we just dump one element? You can dump one element. मान लो सौरभ तुम सिर्फ बुक नंबर डंप करते हो या बुक नेम डंप करते हो, that is okay, that will be dumped, but the question, you will not get marks. Why? Because question has says you have to dump a list containing these elements every time. तुम dump कुछ भी कर सकते हो. That means you can pickle anything, any type of object. Of course there are certain restrictions which we discussed early in previous classes earlier. So but the question has mentioned that every time that function will be called, one record, and what we mean by record, this thing, one list containing these elements has to be given. So इसीलिए you will not get marks for that. क्वेश्चन बोला है लिस्ट डंप करने, तो वही वही ना डंप करोगे, और क्या डंप करोगे. ठीक है, ओके. तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. किधर गया. देखो ये क्या किया, पिकल इंपोर्ट किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है, क्रिएट फाइल. ठीक है, उसके बाद दे हैव ओपनड अ फाइल बुक डॉट डैट, बिकॉज क्वेश्चन सेज, क्योंकि क्वेश्चन जो है तुम्हारा बोल रहा है कि बुक डॉट डैट को ओपन करो और उसमें ये स्ट्रक्चर लिखो. तो दे हैव ओपनड बुक डॉट डैट इन नॉट राइट बाइनरी, मैंने ये गलत बता दिया, अपेंड बाइनरी में करना. व्हाट विल हैपन if you open in right binary, right binary में करोगे तो क्या होगा. We have discussed this. Only the final value that you have written, loss of data, correct. Only the last value that you will be writing, मान लो कि ये 5 times तुमने create file call किया, only the 5th value that you will be writing, because every time you will go, that file will be opened, and you know that whenever you open in write mode, all the previous data will be erased, and then the latest entry will get inside it. So you should always write in append binary mode. ठीक है, ताकि so that the previous data is preserved, and wherever you left last, from there the new data will be added. Right, so new pickled or the dumped data will go at the last, and it will not result in what you say, deletion of or losing of data or the previous data. So that is why you should do an append binary mode. Okay, so they have opened book.dat because the question said कि you have to open what file named book.dat. तो इसीलिए उन्होंने फाइल नेम book.dat ओपन किया है, and they have opened in append mode because they have to add. And why in binary mode? Because the thing that we are going to dump will always be will be a binary form, that is stream of bytes, वो serialized form होगा. ठीक है, so इसीलिए उसको append binary में ओपन कर लिया है in memory location, and that memory location will be referred to as FOJ, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है उसे. ठीक है, now you can take any name, ये तो एक जस्ट बुक में दे रहा है. now they have given, वो बुक नंबर का मांग रहा है,
कि क्या है book number. We have already seen कि record should contain book number, book name, author and price. तो first these four values have to be asked from the user. तो उन्होंने first four values user से ask पूछा. Okay, they have asked first four values. Once the first four values have been asked, उसके बाद देखो उसके बुक नेम इनपुट होगा, ये भी इनपुट होगा. यहाँ पे इंट दिया है प्राइस, पर आई थिंक मोर करेक्ट शुड बी फ्लोट. द रीजन इज कि वी नो दैट द प्राइसेस कैन बी इन डेसिमल्स, 50 पैसे 75 पैसे उस तरह का हुआ सीन, तो फिर दैट इज ठीक है, यू वोंट लूज मार्क्स फॉर दिस. But more relevant should be float, क्योंकि price can be in decimals as well. Okay, and then they have to add record every time. तो record कैसे बनाया उन्होंने? That is a list which will be containing this thing. All the values asked as elements of the list. ठीक है, वही तो तुम्हें add करना है. Once that list is formed as record, जिसको तुमने record नाम दिया, then that has to be dumped. तो तुमने dump function, pickle module के dump function use करके you have added the record in the above opened file f object at the location f object which is opened in append binary mode. ठीक है, so this will add one record, and then you once that record has been dumped, ठीक है, or pickled, then you will close that file object. So every time you will call this object somewhere in the file, will it not open the file in append binary mode, that is book.dat, and then will it not add create a structure or a record, ठीक है, and then will it not dump it? Yes. So this is a very very easy question. ये बताओ ये इतना सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया? स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है. ये देखो and let me know. Vishnupriya. Okay. So what time will you be leaving? स्कूल के लिए तुम लोगों को कितने बजे निकलना है? Meanwhile, I'll just somebody mention there so that I can plan accordingly for today. 9 बजे निकलोगे? Okay. अच्छा पीटीएम है आज. अच्छा ठीक है. No worries, then I'll continue for 20-25 minutes more. Now, the second portion says, अब second part क्या बोल रहा है देखो. So this is part 1. Now second thing is saying he create another file, another function known as count record, which will accept one argument passed to it in the parameter known as author. ठीक है. So इसमें बोल रहा है कि you will create one function such that whenever that function is called, and that function will be named as count record, whenever that function is called, and that function is going to accept one value from outside in the parameter author. So that means you have to at the time of calling, so if you are calling count record and then you will pass author, so function का definition कुछ ऐसा होना चाहिए, def count record and it should accept author. ठीक है, एक author name पास करोगे, वो यहां पास होगा. Okay. Now, and then it says author name as the parameter and count the and return the number of books by the given author that are stored in the binary file book.dat. अब देखो, this file had been created, मान लिया है कि ये फाइल बना हुआ है book.dat. So whenever you will call this function should open this file book.dat.
अब देखो इसमें क्या करना है. The purpose of the second part is unpickling. So if I say the previous part deals with, this is unpickling, unpickle, and this is pickle. If I say more precisely, this will be, here you will be dumping, and here you will be loading. That means loading means retrieving back from the stream of bytes in the original object form. जो तुमने snapshot capture किया था in the binary form, all the list, you have to one by one, again you have to retrieve back the original objects that are contained here. So ये क्या बोल रहा है कि ये फाइल ओपन करो और लोड करो. लोड मीन्स अनपिकल करो. Retrieve back the structures one by one and check, after reading all the structures, after unpickling all the structures from it, check how many, and count and return the number of books given by the author that are stored in the binary file. और उसके बाद तुमको क्या करना है कि काउंट करके रिटर्न करो द नंबर ऑफ बुक्स गिवन बाय द ऑथर that are stored in the binary file. So you have to unpickle, that is load back the structure one by one, and then you have to see कि how many of those structures contain the author name which matches this. So कितने books का author name जो तुम्हारे argument में pass किया गया था when that function was called, so how many of these structures or the lists have their author name कौन सा position पे है. देखो, this is book number, this is name, book name, and this is author, and this is price. So if in this list, in all the lists, which position, which index position has author name? So तुम देखोगे, this is index position 0, 1 and 2. So every time you are going to fetch one or dump one list or load one list, sorry, load back the object which you are sure is nothing but a list. So every time you fetch that list, you check whether the second element of that list matches with the author name or not. Yeah, sort of correct. So हर बार तुम एक लिस्ट को डंप करोगे, मतलब ये लोड करोगे. So you will do something like this. मान लो record is equals to pickle dot, छोटे में लिख देता हूं यहाँ, open file in read binary mode, क्योंकि this time you have to fetch back और load. तो जब जब read करोगे, मतलब fetch load करना है, तो you will read, इसमें कुछ add नहीं करना है, you have to read it and read and unpickle one by one. So in read binary mode, then you will do what, something like record is equals to pickle dot load. और कौन से फाइल से लोड करना है, जो ये फाइल तुमने ओपन किया. लेट्स से इसको फाइल ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, वही वाला. ठीक है. और देन यू विल चेक इफ ये जो रिकॉर्ड होगा वो ओरिजिनल लिस्ट फॉर्म में वापस आ जाएगा. यू विल चेक रिकॉर्ड का सेकेंड एलिमेंट happens to be this value which is contained in the author string. अगर ऐसा हो रहा है तो एक ऊपर में काउंट 0 ले लोगे और काउंट को 1 से बढ़ा दोगे. ठीक है. और ये कब तक करना है, repeat till all
objects have been pickled, have been unpickled, have been unpickled or have been loaded. ठीक है, तो इसको लूप में चलाना है और तब तक चलाना है जब तक कि वन बाय वन, यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू पिकल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार or whatever times the values have been or structure have been pickled or whatever is the total number of structures that have been pickled, उतनी बार लूप में तुम्हें रीड करना है. Every time you will have to load one record, check if its second element contains the same author name. If the author name is same, in जो काउंटर एक तुमने शुरू में दिया, that counter should be increased by one. Keep doing it until the time all the records are or whenever all the records are run, or you can say all the records have been fetched out or loaded. At the end of that, after the loop, okay, the final value of C will give you total number of such records in the file that were pickled, which were having the author name as whatever was passed in the argument. Okay. So what you have to do in the second part, that is, you have to read the file and then load one by one structures, and every time you load one structure or the list which you are telling as or calling as record, you will see if its second element is the same as the author name that has been provided when calling the function. If that is so, that means that particular book record, or that particular book was written by that author only. And so every time that happens, you will increase the counter by one, and at the end of the round, you will find that whatever is the last value of C is the total number of books written by that particular author. So if a record is duplicated in the table, it will be count it to. Yes, सौरभ वो भी काउंट कर लेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो भी, बट तुम्हें क्वेश्चन में उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज क्वेश्चन डजंट से कि यूजर देयर यू शुड हैंडल द डुप्लीकेट सिनेरियोज एज वेल. ठीक है, तो लेट्स कीप इट सिंपल. You don't need to worry about whether there are same entries or not. But क्वेश्चन में ये मान के चल रहा है by the wordings of the question, assuming that कि no two books are same, सबका बुक नंबर यूनिक होगा, ऐसा कुछ मान के चल रहा है. ठीक है, so let's keep it simple. So you tell me, is the second part clear? Is this a second part clear? क्या करना है? Okay. देखो अब इसमें क्या है ना, तुम लोग एक ट्राई और एक्सेप्ट करके ब्लॉक देख रहे हो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. आई विल नॉट टीच यू इन डिटेल, बट मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो होता क्यों है. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. लाइक आई सेड, दैट shouldn't have come because CBSE ने सिलेबस में नहीं लिखा है, but still I'll tell you कि what it does. It's a beautiful concept, exception handling. Just 1 minute. Mm. Uh, now what is exception handling? उसका कंसेप्ट देखो. लेट्स से तुम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हो. क्या लिख दिया? demonstrate exception handling. Let's say you write a simple program
A program to divide one number by other and find answer. Find the result. Now, so यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि there should be two numbers. So let's say I'll call num1 और num1 मैंने यूजर से इनपुट ले लिया. And then you have num2. num2 भी मैंने यूजर से इनपुट ले लिया. Enter the first number. Second number. Now, and I'll find the result. Is equals to और उसके बाद print the result. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, देख लो एक बार. मतलब this will be the one of the मतलब very first programs that we might have come across. कि take two numbers, divide first by second and give the result. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जस्ट बेसिक प्रोग्राम. मैं यूज बताऊंगा कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, बस टेल मी कि ये तो प्रोग्राम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहला नंबर लिया उससे सेकंड को डिवाइड किया. ओके, नाउ कैन देयर बी एनी प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम? I'm not saying the program is wrong or the program has errors, but I am asking, can there be scenarios where this program might come across some problem? Yeah, Saurabh is right. Zero division error. Matlab, this program will work in most of the cases, rather in all of the cases, other than the case in which the new denominator will be zero. ठीक है, तो मतलब क्या, division by zero is not allowed. So computer is not able to handle division by zero. So if I execute this program and you will see यहाँ बोल रहा है कि enter first number, तो अगर मैं enter करता हूँ first number 12 and second number as 4.5, it will give me क्या हो गया. अच्छा, of course मैं float ले लेता हूँ. मतलब numerator denominator can be of any number, even the decimals. So मैं, because I entered the second one as 4.5, so it was not able to execute. Okay, so now first number, let's say I have taken 12, second number I have taken as 3, answer you will get as 4. Okay, now if I divide first number by, again एक और example देख लेते हैं, 15.5 divided by 3.6, तो you will get something. ठीक है, कुछ result है. But what if I divide, let's say first number is 20 and second number is 0, numerator is 20 and denominator is 0, तो क्या आ रहा है? जीरो डिवीजन एरर, फ्लोट डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि हमने एक फ्लोट वैल्यू को मतलब कोई भी नंबर को यहाँ पे हमने जब 20 डाला उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए फ्लोट बोल रहा है. तो फ्लोट डिवीजन बाय जीरो, तो दैट इज rather division of any number by zero, numeric type by zero, is not allowed and it is throwing zero division error. So in computers, errors that we call, the errors that are thrown are also termed as exceptions. ठीक है, कि this is not a normal behavior, this is an exceptional behavior. So this error that has been thrown will be called as exception. So we can write exceptions are the
errors thrown by the program at the runtime. ठीक है, जब हम लोग रन टाइम में एरर थ्रो करता है वो तुम्हारा एक्सेप्शन आ जाता है। नाउ अब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखे हो, एग्जीक्यूट कर जाए तो ठीक है, मान लो ये तो 3 लाइंस का प्रोग्राम है, तो यू हैव कम अक्रॉस कि व्हाट एग्जैक्टली एरर हैपेंड, ओके। बट अगर ये बहुत बड़ा और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करेगा, इफ समबडी इज डेवलपिंग अ वेरी गुड डेवलपर एंड डेवलपिंग अ वेरी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, तो बहुत क्रिटिकल प्रोग्राम रन कर रहा है जिसपे बहुत सारे सिस्टम्स मशीनरीज और ये सब वर्क कर रहे हैं, so that is not acceptable that the program should crash. This error, by crashing I mean कि some error came up which was not handled, ठीक है। so your program error आया और वो सारा मशीन रुक गया, सारा सिस्टम रुक गया। so a good programmer not only writes the program but also thinks of the exceptional behavior, ठीक है। errors को हम लोग बोलते हैं कि exceptional behavior, which was not expected, इसीलिए उसको exception कह देते हैं, ठीक है। so प्रोग्राम मतलब कि कोई ऐसे सिनेरियोज में, जैसे फॉर हियर वन सिनेरियो वाज डिनोमिनेटर बीइंग जीरो, सो इफ सम ऑफ द सिनेरियोज व्हिच कैन रिजल्ट इन एक्सेप्शनल बिहेवियर, उसको हैंडल करना इज नेसेसरी। द हैंडलिंग ऑफ दैट एक्सेप्शनल बिहेवियर इज आल्सो रिक्वायर्ड इन अ गुड प्रोग्राम। so how, what do you mean by handling of the exceptional error? so program, what we mean by handling is program should not simply crash. Rather, if some error comes, you should rather, uh, what you say is do something. You should rather do something and let the person who is managing that system get hold over it, and not the program simply let crash. ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे कि वो एरर आएगा, नो प्रॉब्लम, लेट द प्रोग्राम थ्रो दैट एक्सेप्शन, बट यू विल हैंडल इट इन एन एलिगेंट मैनर, कि नॉट सिंपली द प्रोग्राम सिंपली डज शुड नॉट क्रैश, रादर some information should be laid कि that module failed, please handle it, I am shutting down rest of the program. सो अगर कोई बहुत, मान लो कि ये कोई बहुत बड़ा कोड होता जिसमें कि सम किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ काम कर रहा होता और कुछ कोड गड़बड़ा जाए, कुछ सिस्टम में कोई मशीनरी फेल कर जाए, तो इट मे रिजल्ट इन डिजास्टर। सो व्हाट इफ सम एरर कम्स, programmer will write if this section of code which manages the nuclear power plant, some error happens, what you should do is let the error come, but then before throwing that error, make sure all the devices are turned off, ठीक है। तो उस तरह का हैंडलिंग मैकेनिज्म को कि बिफोर दैट एक्सेप्शन इज एक्चुअली थ्रोन और गिवन बैक, ऑल अदर सिस्टम्स विल बी शट डाउन, तो उस तरह के मैकेनिज्म को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज, इन शॉर्ट, यहां पे तो कुछ है नहीं, तो आई विल सिंपली एज अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग मैकेनिज्म, आई विल सिंपली print a message कि you should not provide 0 as input, try running the program again with a value other than 0 for denominator. So what you will do, the program, the section of code which is prone to throwing error, where there are chances of getting error, ठीक है, in any of the particular scenario, that entire section will be put inside one try block, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, ट्राई रनिंग दिस पीस ऑफ कोड, इफ दिस पीस ऑफ कोड रन सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम, execute it as the program should be executed. However, if there is some error, ठीक है, or if some exception is thrown, then do something here, yeah, ठीक है। that means try running the code provided within the try block
And if there is no problem, no error or exception thrown, then run the piece of code, else run the piece of code in the except block. ठीक है, इसमें ये बोला है कि अगर तुमने प्रोग्राम पहले ये ट्राई करो रन करने का, इफ इट रन सक्सेसफुली विदाउट एनी गिव थ्रोइंग एनी एरर, that's fine. This piece of code should be run in the entirety, and this will not be run. However, if there is some error in any of the lines of this code, you will do the thing. You will directly jump to the except block, and we will do whatever is given there. Don't proceed with the execution of this piece of code. जो तुमने रन किया है, जहां भी एरर आया उसी पॉइंट से सीधा जंप कर जाओ एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में जो जो चीज लिखा हुआ है वो काम करो. सो अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, मान लो कि एक ऑटोमेटिक कार है टेस्ला का, उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके सारे चीज डिजिटल है, तो उसमें कुछ लिखा होगा, सम पार्ट विल बी डीलिंग विद ब्रेक, सम पार्ट विल बी डीलिंग विद एक्सेलरेशन, सम पार्ट विल बी डीलिंग विद सम इंजन मैकेनिज्म, ठीक है, सम पार्ट विल बी डीलिंग विद लॉकिंग सिस्टम और डोर्स एंड विंडोज. तो इस तरह करके कुछ सम पार्ट विल बी डीलिंग विद एयर कंडीशनिंग, सम पार्ट विल बी डीलिंग विद जीपीएस. तो मान लो कि उसमें वन पार्ट, ये सारे पार्ट को वो ट्राई में लिखा होगा, और उसमें कुछ ऐसा दिया होगा कि इफ ब्रेकिंग सिस्टम रन्स इन एरर, ठीक है, ब्रेक सिस्टम उसका पीस ऑफ कोड क्रैश करता है, तो फिर तो गाड़ी ये हो जाएगा, कार विल बी, या देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. सो देन इमीडिएटली जंप टू एक्सेप्ट ब्लॉक एंड अप्लाई ऑटोमेटिक ब्रेकिंग. ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगा दो. तो कुछ ऐसा कर सकते हैं वो लोग. या न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई कोड है, तो उसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर मैनेजिंग ऑल द मशीनरीज एंड डिफरेंट बॉयलर्स और जो भी है तुम्हारा रिएक्टर्स, वो सबको. तो उसमें क्या होगा कि रन the keep running the piece of code for energy generation. However, if there is some error, immediately jump to accept block and shut down. जैसे ही एरर आएगा यहाँ, you know, whenever error comes, accept block is executed immediately, and deactivate all the you can say machinery and reactors. ठीक है, ताकि वो कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए या कुछ. तो इसीलिए ट्राई ब्लॉक इज देयर. ये सेल्फ फेल सेफ मैकेनिज्म है कि अगर नॉर्मल प्रोग्राम चला तो ट्राई वाले ब्लॉक को चलाओ, रन दिस ट्राई ब्लॉक, and if some abnormal things or unexpected behavior happens, go to the accept block and run whatever code is there as a rescue mechanism or a you can say firefighting mechanism. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग we will simply, यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, we are just demonstrating. We'll write print error happened, or you can write exception thrown. Are you sure you provided a non-zero value? Just writing anything in denominator. ठीक है, तो देखो अब ये क्या होता है. अब इसको रन करेंगे हम, एक नॉर्मल सिनेरियो काम करके दिखाएंगे. लेट्स से 15, first number numerator that is num1 is 15, denominator that is num2 I'll give as 5. Normal scenario work किया, that means try block was run completely, except में गया ही नहीं, it did not enter the except block. Now let us run it again. I'll give here 12 and in denominator I'll give as 0. अब वो क्या हुआ, ये कितना क्लीन पीस ऑफ कोड लग रहा है कि not only the system failed to work, as when the failure was met, वो क्या किया,
immediately some rescue mechanism was there and that was executed. ठीक है, तो तुम देखो कि तुम्हें क्या आया, exception thrown, are you sure you provided a zero value, a non-zero value in denominator? That this is making more sense, right? तो इसीलिए तुम्हारा ये किया जाता है कि एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है एलिगेंटली, सो दैट डिजास्टर piece of coding is clean, execution is clean, and also your exceptions are handled to prevent some disasters, uh, or as a mode of precaution or prevention. ठीक है, बताओ ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कोड को बस ट्राई में लिख देना, और अगर ये कोड फेल करता है तब क्या करना है, इन केस द कोड फेल्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट पीस ऑफ एक्शन शुड बी रिटन इन एक्सेप्ट। तो वही लिखा हुआ है, ट्राई रनिंग द कोड, इसमें नीचे में लिख देता हूं, रन नॉर्मल piece of code in try block, and then if the code fails, what action you should perform right in except block. ये बताओ एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस क्लियर है या नहीं है? Now we'll go back to that solution कि why I taught you this and why that was required. प्रियंका समझ में आ गया? एक्सेलेंट, ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट nonetheless a very important one, a vital one also. ठीक है, and you will always as a good programmer you will have to do. I'm not saying कि मैंने exception handling cover कर लिया है. I have dealt hardly 10% of the exception handling. There are further details कि you not only that you can identify कि which type of error occurred, तो वो सारा चीज भी होता है इसमें, पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, पलक, इज इट क्लियर? क्लियर है तो बताओ। Shall I continue for 5 more minutes and discuss the solution, या रुक जाओ, कल देखें? बताओ। So if you got to leave or make some preparations, so we'll stop. Else we'll see the solution also in 5 minutes. Yes, Saurav, Priyanka and others. Let me know उसी हिसाब से। ठीक है, चल देख लेते हैं, अच्छा कल देखते हैं, चलो ओके, कल ही देख लेंगे। सो आज तुम्हारा काम क्या है? दैट विल टेक 5-10 मिनट्स, तो कल देख लेते हैं, नो वरीज। एक को भी अगर ऐसा लग रहा है तो विल नॉट प्रोग्रेस। व्हाट आई विल डू इज you can take the snapshot of this file, या नहीं तो मैं भेज भी दूंगा, and you will also for 5 minutes you will also open this file, ठीक है, और उसमें we have not discussed the count rec method, उसमें ये try close वही दिया हुआ है कि normally ये काम होगा, and whenever as soon as the error occurs you will go here, ठीक है। इसमें error क्यों चेक किया है? Because you are reading one by one in an infinite loop, और जब भी there is no way of knowing कि how many records are there pickled in the file, ठीक है। तो जब भी तुम ऐसा टाइम आएगा, first time you have read, then again you will read one more time, again you will read one more time. The moment all the pickled objects are done, you are done reading them, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, है ना, उसके बाद you will see that error pops up, error आ जाता है। ओ जैसे ही एरर आएगा कि तुम्हारा इधर जाके फाइल क्लोज कर देगा,
ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू ऑफ सी जो है रिटर्न कर दोगे, दैट वाज नंबर ऑफ फाइल्स विद दैट ऑथर नेम, तो वो हो जाता है। इसीलिए जब जब तक नॉर्मली चलना है यहाँ पे, और जैसे ही एरर आएगा क्लोज दैट फाइल एंड देन रिटर्न दिस नंबर। तो वो कंसेप्ट है, कल देखेंगे हम लोग। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट आज देख लेना जो हम लोग देखे हैं कि हाउ टू रीड द फाइल एंड ऐड द 4 बुक्स नेम्स, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ, ये फाइल तो मार्किंग स्कीम है, दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, देखो सीबीएसई वाली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे ना, वो सैंपल पेपर में सीबीएसई academic.nic.in में, ठीक है। एंड इफ यू आर रेफरिंग टू प्रियंका, इफ यू आर रेफरिंग टू दिस फाइल, वो मैं भेज दूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मार्किंग स्कीम जाके डाउनलोड कर लेना यहाँ से, यहाँ पे जाओगे सैंपल क्वेश्चन पेपर में 12th एंड देयर कंप्यूटर साइंस के अंदर में सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसकी सॉल्यूशन। ओके, चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर, टुमारो विल मीट द सेम टाइम।